अरे। हम्म। Okay. Okay, guys. So, good evening to all of you. I hope everyone is doing fine. I welcome each and every one of you to another class of SSB Crack Exam. So, guys, हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं FCAT 1 2023 की क्लास, जहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है। सो गाइज, अभी हम लोग का चल रहा है FCAT का सिनोनिम का क्लास। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ MCQ प्रैक्टिस। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। और आप सभी लोग के क्वेश्चन का आंसर देना। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल द आंसर्स, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आप लोग की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग आज का टाइम टेबल देखेंगे गाइस। सो इट इज 21 जनवरी। सबसे पहले भी स्टार्ट ऑफ विद दिव्यांशु सर का क्लास, ठीक है, डेली डिफेंस अपडेट। उसके बाद दृष्टि मैम का क्लास ऑफ एसएसबी इंटरव्यू लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर एफकैट की बात करें, एट 4 यू गाइस हैव मैथ्स का क्लास, ठीक है, विद मयंक सर। एट 5:30 इंग्लिश का क्लास, और 7 बजे होगा आपका दिव्यांशु सर के साथ क्लास, ठीक है, ऑफ स्टैटिक जीके। ठीक है गाइस, तो ये तो रही आप लोग की क्लासेस की बात। अभी जल्दी से हम लोग टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ, अभी हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं। सो एवरी ईयर यू गाइस बेसिकली गेट, अगर पेपर टू पेपर बात करें तो यू गाइस गेट थ्री थ्री क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, एक बार 2020 में यू गाइस गॉट 2 क्वेश्चंस, बट अदरवाइज अगर एवरेज निकालेंगे तो 3 क्वेश्चंस का ही आपका आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं दे आर नॉट कंपेरेटिवली दैट डिफिकल्ट, मतलब बेसिक टू मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी आता है। बट अगेन हर साल आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर कोई एक आपको वर्ड दिया गया तो उसी का वेरिएंट या फिर कुछ ऐसा आ जाएगा। सो इट्स नेसेसरी कि आप लोग एंटोनिम और सिनोनिम्स को साथ में लर्न करें। सो एटलीस्ट इफ यू आर लर्निंग 3 एंटोनिम्स, सो यू लर्न 3 सिनोनिम्स फॉर ईच वर्ड, ठीक है। सो दैट इज नेसेसरी, ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी से शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। वी विल रीड इट फर्स्ट। सो डायरेक्शन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है, एंड इट विल हैव 4 सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, दे विल गिव यू एनी वर्ड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल सैड, राइट। सो एक वर्ड दे दिया, उसका आपको ऑल्टरनेटिव, नॉट ऑल्टरनेटिव, दे विल गिव यू ऑप्शंस, ठीक है। यू जस्ट हैव टू चूज कि आपको क्या लगता है कि क्या है उसका आंसर। यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो आपको करना रहेगा, ठीक है गाइस। तो जल्दी से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो रेडी हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्लिटरेट। सो ऑब्लिटरेट का क्या मतलब होता है? ए इनिशिएट, बी डिस्ट्रॉय, सी सॉल्व, या डी डिड्यूस। मैम बी डिस्ट्रॉय। हम्म। बताइए बताइए बताइए, ऑब्लिटरेट। हम्म। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके गाइस, सो व्हाट वी नीड टू नो इज, सबसे पहली बात, एब्सोल्युटली राइट। व्हेन आई से द वर्ड ऑब्लिटरेट, इट एक्चुअली मींस यू डिस्ट्रॉइंग समथिंग, राइट। सो इनिशिएट का मतलब होता है आपने अपनी साइड से कोई चीज बिगिन की, इनिशिएट ली, उसका इनिशिएटिव लिया, ठीक है। सो ऑब्लिटरेट का तो हो गया डिस्ट्रॉय करना। सॉल्व मतलब कोई चीज का सोल्यूशन पाना। व्हेन आई से द वर्ड डिड्यूस, सो इट वुड अगेन बी रिलेटेड टू कंक्लूजन, मतलब किसी कंक्लूजन पर आना, राइट। सो इसका मीनिंग, सॉरी ये नहीं, डिस्ट्रॉय ही हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेरी, इज इट ए क्वेस्ट, बी डिनाउंस, सी इंटर्न, और इज इट क्वैक। हम्म। हम्म।
बताइए क्या होगा। हम्म। मैम एक क्वेस्ट। Okay, guys. So, yes, absolutely right. When I say the word query, so it actually means some kind of quest or some kind of aim that you have. ठीक है? So it's related to that. So obviously, quest, aim, right? When I say the word denounce, so basically you give up a lot of material things या कोई चीज आपने denounce कर दी, so give up कर दिया, ठीक है? Intern is again you are interning under someone, ठीक है? आप एज अ ट्रेनी ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड हो जाता है, ठीक है? सो अगेन इट वोंट बी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एम और क्वेस्ट, ठीक है? जो भी आपका क्या बोल सकते हो उसको, कोई भी एम है, मोटिव है, इट वोंट बी रिलेटेड टू दैट. Quake again, guys, is a word which is related to some kind of shake, ठीक है? या फिर some kind of tremble जिसे बोलते हैं, tremble करना, trembling as we say, ठीक है? सो इसका आंसर क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ quest हो सकता है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर. सो ग्रेट. ठीक है. इंटरफेरेंस, इज इट ए ऑनर, इज इट बी डेफरेंस, इज इट सी ऑब्स्ट्रक्शन और इज इट डी फियरफुल? हम्म. See, the word itself says it is some kind of interference, right? So when we interfere, it basically means we are obstructing something, है ना? We are impeding something, जैसा उसको रोक देना या उसके बीच में किसी तरीके का बांधा आना. ठीक है? You're trying to obstruct it, है ना? Honor तो करना is again is related to some kind of respect. ठीक है, इस चीज को ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं. डेफरेंस इज अगेन इज अ वर्ड विच वुड बी रिलेटेड टू रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, ठीक है? एंड फियरफुल इज अगेन somebody इज fearful, डरने वाला और वट एवर, राइट? सो दैट कैनॉट बी द आंसर. सो योर आंसर वुड बी सी, ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक. ओके. वेरी similitude. Okay, so what would be the synonym? Is it festive? Is it be fantastic? Is it gross or is it authenticity? Hmm. Yes, absolutely right, guys. जब हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, very similitude, it actually means something is what? Something is authentic, something is real, something is genuine, right? उसी की जगह हम grotesque की बात करते हैं तो grotesque is a word which is यहाँ से शुरू करते हैं, एक मिनट. क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुको. Guys, can you all see me now? दिख रहा है ना? यस मतलब मैम। आई होप आई एम नॉट स्टक. नो नो मैम। मैम बीच में कहीं हुआ होगा शायद से, बट नोटिस नहीं अच्छा किया था। अच्छा, ओके, ठीक होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई स्विच इट ऑफ. ओके, सो हाँ, किधर थे? सो फेस्टिव इज रिलेटेड टू फेस्टिविटीज ना, आपके जो त्योहारों से रिलेटेड होता है. फैंटास्टिक इज लाइक समथिंग इज ग्रेट और वट एवर, राइट? ग्रोटेस्क इज अ वर्ड विच वुड बी रिलेटेड टू कोई चीज ऐसा होता है ना, डिफॉर्म्ड होती है, मतलब अच्छे से फॉर्म नहीं होती है, जैसे बोलते हैं ना डिफॉर्म्ड है, कुछ बच्चे भी डिफॉर्म्ड होते हैं. हाँ. सो उस सेंस में आप इसको ग्रोटेस्क को यूज कर सकते हो. ऑथेंटिसिटी वुड बी अगेन रियल, ठीक? तो वो हो जाएगा सरमाइस, नॉलेज, गेस, ट्रूथ और बायस.
मैम बी गेस. हम्म ओके, ग्रेट आंसर्स तो आ रहे हैं. Great, great, great. Very good, guys. Absolutely right. When I say the word surmise, it is a word which is related to guess. Again, it would be opposite of knowledge now because knowledge is not based on guess. Knowledge is knowledge. ठीक है, so these can't go together. ठीक है, तो conjecture भी बोल सकते हैं. Truth is again another thing. ठीक है, कोई चीज truth है. ठीक है, true है. बायस इज अगेन सम काइंड ऑफ बायस दैट यू हैव. ठीक है, किसी चीज के लिए लाइक यू नो एक जो आपका ओपिनियन बन जाता है, धारणा बन जाती है किसी चीज को लेकर, तो बायस हो जाएगा. ठीक है, आप उस चीज के प्रति बायस्ड है. या पार्शियल भी बोल सकते हैं. फिल्च, इज इट हाइड, इज इट स्टील, इज इट स्विंडल और इज इट कॉवर्ट? हम्म फिल्च. ओके. मैम stealing something. Glitch. हम्म because see, when I say the word covet, it actually means some kind of desire, है ना? Right. उसी तरीके से if I say the word swindle, it is actually related to deception, as we say. है ना? आप किसी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ कराने की कोशिश कर रहे हो. सो हाइड तो कोई चीज छुपाना होता है ना. सो filch is a word which is related to stealing. ठीक? So that would be the answer. Because stealing is not directly related to swindle, na? That's a completely different thing. Deception is a different. So, right. Urbane, what would be urbane? Well dressed, friendly, polished, or prominent? Ma'am, A, well dressed. What about polished then? Hmm. Hmm. Okay, guys. अरे so when we call something polished तो वो भी तो वही होता है. Polished होना कोई चीज. I am not talking about boot polish, by the way. It is polished, it is poised, it is sophisticated. ठीक है? So well dressed is not directly related to like okay somebody can be sophisticated in their mannerism also na. So it is only pointing towards one particular thing. You guys understand the difference? So if I'm calling somebody polished, that's not just their dressing sense, that's mannerism and everything. So polished would be the answer. ठीक है, again friendly cannot be the answer. Well dressed, okay, somewhat, but cannot be the exact answer because again it's related to somebody being sophisticated and all. ठीक है, और prominent is again something which is widely, है ना, वहां पे देखा जा रहा है, spread हो रहा है, so prominent. Dissent, bisect, pour off, speak widely or bequeath. मैम बी. Hmm.
मैम Okay. ऑप्शन बी pour off. Hmm. Yes, so answer would be pour off. Basically, it means like when you are passing liquid from here to here. So we can call it pour off. But when I talk about the other words, so bisect का मतलब होता है when you divide things in two parts, guys. Right? So that would be it. Speak wildly again, wildly, जंगली जैसे बात करना. So again, that is understandable. ठीक? बीक वेट का क्या मतलब होता है? अरे यार ये क्या हो रहा है? मिनट. Basically, guys, when somebody dies, okay, people die, right? And they sometimes leave a will behind them. कि, you know, I will give you this, I'll give you that. So that's what it is. It's related to will. Yeah, you leave something and you leave something for others. Like it's related to will and all. So that would Pass be. on. Huh? Pass on. Pass on something like हाँ, you pass from on father something. to daughter or son or anyone. हाँ 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 हाँ. So they inherit na something. So yeah. Okay, so pour off, correct. Obverse, okay. What is obverse? Is it contract? Is it examination, conclusion, or opposite? Hmm. Contract again is related to some agreement that you have with someone, right? So that is not the answer. We are not trying to examine someone or some kind of examination जो आप लेते हो. Conclusion हो जाता है आपका end. ठीक है वो भी नहीं obverse होता है. So obverse would be opposite of something or something which is contradictory. ठीक है. So this would be your answer D. ठीक है opposite. Right, absolutely correct. Depredation. What is depredation? Is it a festival? Is it some kind of sea battle? Is it some kind of disease or is it some kind of ruin? मैम डी. Hmm. Ma'am D ruin. Okay. Great. Correct, correct, correct. Because again, guys, if I'm saying depredation is related to ruin or some kind of destruction, it is not related to any kind of ailment या फिर किसी को कोई disease हो गया है या फिर कोई लड़ाई हो रही है, sea battle हो रही है या फिर कोई festival हो रहा है. So that would be the answer. Absolutely correct. Sang-froid किसको बोलते हैं? Is it some kind of caution? Is it some kind of short-sightedness? Is it some kind of timidity or self-assurance? Ma'am D self assurance. Hmm. Okay, correct. Absolutely right, guys. Because when I say the word sang-froid, it actually means some kind of self-assurance out of these, or if somebody is like, being bold in some way. Right. So it again would be opposite of what do you call sang-froid? Timidity, if I talk about it. Because if I'm calling somebody timid, so that means they are submissive, right? है ना वो बिल्कुल भी बोल्ड तो है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट सबमिसिव है शाय है फियरफुल है राइट उसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट शॉर्ट साइटेडनेस अगेन इट्स रिलेटेड टू somebody बीइंग नैरो माइंडेड ठीक है बहुत नैरो माइंडेड है उनको भी हम बोल सकते हैं ज्यादा उनकी ऊंची कोई सोच नहीं है कॉशन वुड बी अगेन रिलेटेड टू
कोई केयरफुलनेस जो दिखाना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आंसर करेक्ट। Resilience. A. Wealth. B. Loudness. C. Courage. Or D. Luck. Resilience, right? Some people are resilient even in adverse times. So that means they are courageous, like they have a lot of courage. So if I'm talking about courage, so it's not at all related to somebody being wealthy or their wealth or rich. It's not related to somebody being loud, ठीक है, or their luck. ठीक है, so it's C, absolutely right. Okay. Accusative, okay. So is it deadly? Is it some kind of dilemma? Is it C, serving only for pay, or is it something delicate? Ma'am, option C, serving only for pay. Okay. बताइए गाइस क्या है आंसर? Okay, great, great. Absolutely right, guys. Very good. वेरी वेरी गुड। सो इसका आंसर एक्चुअली होगा सर्विंग ओनली फॉर पे। ठीक है। सो इट इज समवन हु इज, अगेन हमने कल भी ऐसा मतलब इसका सिनोनिम ही किया था, मनी ओरिएंटेड जिनको बोलते हैं ना। ठीक है, some people are money oriented. Dilemma is again when you have choices and आप थोड़ा confused हो कि okay should I go for this, should I go for that, ठीक है। Again deadly would be something which is fatal या फिर जानलेवा हो सकती है। तो उसके लिए delicate again would be something which is fragile, है ना, जल्दी टूट सकती है, कुछ हो सकता है उसको। So correct, this would be the answer. Great. Next पे चलेंगे goading. What is goading? Is it a courage? Is it C, impatience? Is it some kind of arrogance? Or is it some kind of boost? Ma'am, option D, I guess, boost. No, no, yeah. Guys, yes, it has to be boost. It is not at all related to somebody being arrogant or haughty. ठीक है, it's not related to courage, it's not related to resilience किसी तरीके का, not at all related to somebody being impatient, ठीक है, not related to arrogant, it is actually related to some kind of boost that you get. और इसको ऐसा बोलते हैं ना, impetus जैसा, या है ना, आपको कोई ऐसा Ma'am, मोटिवेशन, stimulating. हाँ स्टिमुलेट कर Stimulating. देता है, हाँ। सो दीज वर्ड्स वुड गो विद कोडिंग, करेक्ट। रिडंडेंट, ओके। रिपेंट, सरप्लस, सिंगुलर और अननेसेसरी। रिडंडेंट गाइस। Ma'am, not necessary. Option D.
Yeah, how can it be anything else? When I say some solution is redundant, that means, or like some kind of answer is redundant, that means it is unnecessary. है ना? उसी की जगह एक हमारा हो जाता है सिंगुलर वन, प्लूरल हो जाता है मेनी, मोर देन वन एज वी से, राइट? सरप्लस इज मोर, एक तो होता है कि ओके सफिशिएंट अमाउंट, एक होता है सरप्लस, दैट मींस मोर देन इनफ एज वी से, ठीक है? रिपेंट करना मतलब किसी चीज का आपको पछतावा है, राइट? यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ रिग्रेट, सो देन यू रिपेंट, है ना? सो दैट वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट टर्म, सो इसका आंसर हो जाएगा अननेसेसरी. What is fair? Is it untrue? Is it just? Is it coarse or is it harsh? B, ma'am. Ma'am, Hmm. option B. This one is really easy. When I say something is fair, it exactly means that it is just, right? So if I'm saying something is just, it is not related to something being untrue or something being false. Again, it is not related to something being coarse or something being raw or harsh or mean or whatever, right? So we are not talking about that. So the answer has to be just, correct. Right. Next पे चलेंगे. Exuberant. Is it serenity? Is it calm? Is it cheerful? Or is it courageous? Hmm. Exuberance. Yes, correct. Very good, guys. Absolutely correct. Because when I say that something is exuberant, it actually means it's really cheerful. Right? There's a lot of energy, there's a lot of cheerfulness going on. So again, it is not related to some kind of serenity or some kind of peace. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी कामनेस में समवट रिलेटेड टू पीसफुलनेस और वट एवर काम है. करेज इज अगेन वुड बी रिलेटेड टू करेज और सम काइंड ऑफ रेजिलियंस. सो इसका आंसर हो जाएगा चेयरफुल. ठीक. सो वेरी गुड. Trifling. What is trifling? Is it crucial? Is it significant? Is it trivial? Is it languish? Yes, guys, absolutely right. When I say that something is trifling, that means it is trivial, and which would be the opposite of crucial and significant. Because when I call something crucial and significant, that means it is important, right? So the opposite would be trivial, that means it is not important, or it is obviously it's trivial, it is insignificant, as we say, right? And languish would means like something is weakening. ठीक है, when something weakens, we say languish. ठीक है? So this would be your answer. Absolutely right. What is canny? Is it obstinate? Is it B, handsome? Is it C, clever? Or is it stout? Hmm. Ma'am, option C, clever. Hmm.
Okay, guys. So let's see. Absolutely right, guys. When call somebody canny, it actually means that they are clever. Okay. Or witty or whatever. We can say that. ठीक है? जैसे कि smart है. Right. उसी की जगह when I call somebody obstinate, that means they are headstrong or as we say headstrong बोल लेते हैं चलो they are headstrong or as we say in English stubborn होते हैं ना कुछ लोग. Right. Handsome is again if somebody looks good we call them handsome. This word would means like they are strong. ठीक. Like they have a strong build. So this would be the answer. Correct. Alert. Is it energetic? Is it observant? Is it intelligent? Or is it watchful? Ma'am, watchful. Option D. Okay. Yeah, right. Absolutely right. Because when I call somebody alert, right? So that means if you guys are in this class, so you are alert to whatever is happening. You are not lost in your own world. So that means you are watchful. अभी observant उससे काफी different हो जाता है अगर मैं किसी को observant बोल रही हूँ that basically means that they observe things not necessarily कि वो बहुत ज्यादा alert रहते हैं पूरे time. It's just that they are observant of maybe the minute of details. है ना, as we say meticulous होते हैं कुछ लोग, they are very observant, they observe things, but not necessarily means कि every time they are alert. Because alert would be a completely different word, है ना? तो alert का हो जाएगा somebody who is watchful. So again, it's not related to कि कोई इंसान कितना energetic है, कितनी energy है, या फिर वो कितने intelligent है, या कितने smart हैं, witty हैं. Right? So this would be the answer. Correct. नेक्स्ट पे चलेंगे. वॉरियर किसको बोल सकते हैं? सोल्जर को, सेलर को, पायरेट को या स्पाई को? Ma'am, option A, soldier. पायरेट को क्यों नहीं बोल सकते वॉरियर? Ma'am, his nature is like thief. That of a thief. लूटने का Yeah, काम. yeah, समुद्री लुटेरे। absolutely. Yeah, absolutely right. तो Absolutely right. वॉरियर So, किसी को लूट नहीं सकता. yeah, because see, when I call somebody a warrior, it doesn't have that negative connotation ना कि ये warrior है तो भैया कुछ उल्टा काम करते हैं, murder करते हैं और loot people or whatever, right? So soldier would be something which can be an equivalent because जब भी हम soldier एक word use करते हैं तो it is somewhat related to adjectives, right? Somebody who is really resilient, who is really courageous, who is really bold, who is really confident ना. ठीक है. अगेन जब मैं एक सेलर की बात करती हूँ, ठीक है, सेलर तो कोई भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि सेलर लोग करेजियस नहीं हो सकते, बट नेसेसरली डज नॉट मीन दैट, क्योंकि सेलर मतलब ठीक है सेल करते हैं. ठीक है ना? सो पायरेट तो अगेन पूरा नेगेटिव कॉनोटेशन में चला गया. और स्पाई वुड बी अगेन somebody जो हिडन आइडेंटिटी बना के दे स्पाई ऑन पीपल, है ना? सो अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू somebody एग्जैक्टली बीइंग अ वॉरियर. ठीक है, सो आंसर इसका हो जाएगा सोल्जर. करेक्ट. What is distant? Is it far? Is it removed? Is it reserved? Or is it separate? मैम, ऑप्शन A, far. बस ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। हाँ, आएगा तो फिर सभी कर लेंगे फिर. हाँ, 250 प्लस पर हमारे हैं. फिर तो कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा वाला सिचुएशन हो जाएगा. ओके. या. ओके, राइट, एब्सोल्युटली राइट गाइस, बिकॉज व्हेन आई से समथिंग इज डिस्टेंट तो मतलब वो दूर है, मतलब वो फार है. क्योंकि अगर मैंने रिमूव कर दिया तो पूरे तरीके से आपको उसको इजेक्ट कर दे रहे हो ना, बिल्कुल ही हटा दे रहे हो. रिजर्व मतलब जो अपने में ही है, इट्स रिजर्व. ठीक है. और सेपरेट तो अलग कर दिया बिल्कुल. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ सेपरेशन या रिमूव कर दो या रिजर्व कर दो. बेसिकली फार, दूर है. करेक्ट. What is adversity out of these? Is it a failure? Is it helplessness? Is it some kind of misfortune or is it some kind of joy?
Ma'am, misfortune. ओके चलो. ये भी हो Okay, सकता guys. है मैम. No, no. See, when I call something adverse, okay, it usually means, does not necessarily means that there is some kind of failure that you're facing. It actually means some kind of misfortune या कोई बहुत बुरी चीज आपके साथ हो जाती है. ओके, ठीक है. या फिर जैसे बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेट हो जाती है. सो इट कैन बी समवट रिलेटेड टू एडवर्सिटी. ठीक है, बिकॉज फेलियर एंड सक्सेस वुड बी समथिंग डिफरेंट. ठीक है. Helplessness again, when you do not know what to do, you are feeling helpless. ठीक है, as we say ना, I'm feeling helpless right now. I don't know what to do, whatever. Right? So joy again would be complete opposite. So we can say misfortune would be the nearest answer. Lament. Is it complain? Is it comment? Is it condone? Or is it console? Hmm. डी मैम. Console. Hmm. Okay, guys, so let's see, because when I say that something is lament, it actually means, lamenting means it is complaining about something. किसी चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. उसी की जगह अगर मैं कमेंट की बात करूँ, तो कमेंट तो यूजुअली लोग यूट्यूब पे भी करते हैं, तो कमेंट करना. ठीक है, उसके बारे में कुछ भी आपको अपना भावना व्यक्त करनी है, जो भी, सो कमेंट कर दिया. अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. राइट. जब हम किसी किसी चीज को, इफ आई एम कंडोनिंग समथिंग, इट एक्चुअली मीन्स आई एम इग्नोरिंग इट. ठीक है, आप उसको अच्छे से इग्नोर कर रहे हैं, कंडोनिंग इट. ठीक है. व्हेन आई से यू आर कंसोलिंग, अगेन आप किसी चीज को, इफ समथिंग हैपेंस टू योर फ्रेंड, राइट, यू कंसोल देम, आप उनको सहानुभूति दे रहे हैं. ठीक है. सो दैट वुड बी कंसोलिंग. सो इट्स रिलेटेड टू कंप्लेनिंग. राइट. आई होप इट्स क्लियर. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. Foray. What is foray? Is it maraud? Is it some kind of contest? Is it some kind of ranger or intuition? I know. See, first of all, we can, if I look at these words, I can see for a fact that when I say the word ranger, it is actually used for forest. Okay, like this, there are some people, right, who live in forest, forest rangers as we call them, है ना? They protect it, they kind of keep it reserved. या जो भी, like, sorry, not reserved, like preserve it, है ना? So it's a term which is usually used for forest. So that's not exactly the meaning. हाँ, as we say forest rangers. ठीक है. Contest would be again any kind of contest or any kind of competition, right? So again, it's not related to that. ठीक है. When I say intuition, so intuition is again related to our sixth sense, which is not really rational, but you kind of feel it. ठीक है. So this would be the answer, because foray and morad are related to attack. ठीक है, attacking something. So this would be your answer. So A. ठीक. What is reckless? Courageous, rash, bold, or daring? बी मैम. Yes, ma'am, B. Rash. Yes, guys, because if I call somebody reckless, it's not a good thing, right? If I call somebody reckless, like somebody is a reckless driver, okay, it's good to be bold, it's good to be daring, okay,
Because these are somewhat good quality. If I call somebody courageous, you are really bold, you're really daring. But on the other hand, okay, if somebody is being rash or somebody is being reckless, it means they are not using their rational ability, right? And they are just taking decisions based on their maybe whims or fancy, or they are just being impulsive, as we say, है ना? So that would be the answer. Absolutely correct. Inebriate was what is it? Is it dreamy? Is it stupefied? Or is it unsteady? Or is it drunken? Ma'am, B. Hmm. Okay. Inebriate. Ma'am, option D, drunken. Okay, so when I call somebody dreamy, again it's related to बहुत ही ज्यादा ड्रीम, ठीक है? तो ड्रीमी हो गया, ठीक है? This word is when you cannot think, when you cannot think clearly, or maybe you are not using your reason. तो ये भी नहीं हो सकता. Again, it is related to stupidity again. Again, C would be related to somebody unsteady. When I call somebody unsteady, it can also means like they are not stable in some sense. Okay. Again, inebriate can actually mean drunken state or something like that. So that would be the answer. Correct. ठीक है? Yes, ma'am. So next पे चलते हैं. Sterile. Vast, arid, childless or dry. Ma'am, A. See, if I call somebody sterile, it actually means Ma'am, that they cannot produce. है ना, B. यूजुअली इट्स यूज्ड फॉर दैट, और अनप्रोडक्टिव के लिए भी यूज किया जाता है. दे आर चाइल्डलेस बेसिकली. ओके. एंड एरिड इज अगेन अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सम काइंड ऑफ एरिया विच इज, जैसे राजस्थान है, ठीक है? सो वी यूजुअली यूज इट फॉर सम काइंड ऑफ हॉट और ड्राई प्लेसेस, है ना? आई एम श्योर यू गाइज मस्ट हैव हर्ड ऑफ बास्किंग इन द सन मीन्स यू लाइक टू टेक सन बाथ एज वी से, है ना? So again, that cannot be the answer. Strike out, strike out. ठीक है? They can't produce. So C. Abject. What is abject? Is it some kind of challenge? Is it something which is miserable? Is it something that we deny or disobey? Hmm. Okay. Disobey or deny. ma'am, either A or B. Hmm. Yeah, right. Yeah, guys, because see, this word is not at all like it's not related to you denying something, कि आप कोई चीज झुकला रहे हो, you are denying it, ठीक है? या फिर you are not obeying it, ठीक है? You are disobeying it. एक होता है obey करना, right? You follow it, you abide by it. But again, it's actually related to something being really, something being miserable. ठीक है? बहुत ही बुरी, and it's not related to any challenge. So abject का answer would be miserable. ठीक है? What is moving? What can be the synonym for moving? Taking, toying, shifting, or turning. Ma'am, C, ma'am. shifting.
Yeah, because in English we usually say na that we are moving. ऐसा ही बोलते हैं ना, we are moving to another place. So I don't think we usually say that we are taking, है ना, किसी से कोई चीज ले रहे हैं, टॉइंग उसके साथ खेल रहे हैं, राइट, टर्निंग उसको टर्न कर रहे हैं, है ना. सो इसका आंसर शुड बी शिफ्टिंग. करेक्ट. What is ironic? Is it something which is inflexible? Is it something bitter, good-natured, or disguisedly sarcastic? Ma'am, D. Hmm. Mm-mm. Okay, guys. Okay, so first of all, if we look at the options, the first one is something which is inflexible. That means it is not at all flexible. ठीक है. So that is not actually the answer. When I call something bitter, it would be the opposite of sweet. Again, bitterness की बात नहीं हो रही है. We are again not talking about somebody being good nature or not being good natured. ठीक है. So disguisedly sarcastic would be the answer because when we like talk about something being ironic, it actually means something being opposite of something, right? So if I tell someone that you know what, you are going to do wonders in your life, but if they grow up to be someone who is not doing that well or whatever, okay, so they are suffering or whatever. So that would be kind of ironic to what I said to them, okay. So disguisedly sarcastic would be the answer, correct. ठीक. Extricate. What is extricate? Is it pull? Is it free? Is it tie? Or is it complicated? D. देख लो ऑप्शंस. एक्सट्रीकेट करना. जिसे बोलते हैं ना, एक्सट्रैक्ट भी करते हैं समवॉट. Yes, ma'am. Option B. Yeah, guys, so it's not at all related to you pulling something or pushing something. ठीक है, we are not trying to complicate anything. Extricate is not that. Okay, no complication. And you are not tying because this word is actually related to freeing something, or like, or maybe if you come across any word, removing something, ejecting something, or whatever, right? So extricate would be the, sorry, remove, free would be the synonym. Repeal, sanction, perpetuate, pass, or cancel. Hmm, great. Great, 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 great. No, no, no. When I say that something, chalo, ठीक है, I'll wait for 10 seconds more. Ma'am, option D. Cancel. Yeah, because when I say something has been repealed, it actually means it was cancelled or it was revoked, as we say in English, ना. रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया, राइट. सैंक्शन हो गया मतलब अप्रूव हो गया है वो चीज, तो उसका कोई रिलेशन है ही नहीं. परपेचुएट करना या परपेचुअल होना, अगेन समथिंग इज कंटिन्यूअस और समथिंग, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंटिन्यूटी हियर. अगेन किस चीज को पास कर देना, उससे भी कोई रिलेशन नहीं है. सो कैंसल वुड बी द आंसर. वेरी गुड. ठीक. नेक्स्ट पे चलेंगे. व्हाट इज ल्यूडनेस? इज इट सम काइंड ऑफ ब्लिस? इज इट सम काइंड ऑफ डिप्रेशन? इज इट सम काइंड ऑफ indecency? Or is it some kind of recession?
Ma'am, option C, uh, indecency. Okay. Yes, guys, because usually we use this term in like when we talk about harassment, okay, like he or she passed lewd remarks, right? So when somebody is passing lewd remarks, it is something which is considered to be indecent, okay, something which is inappropriate, especially when we talk about uh, especially if we talk about like any kind of sexual harassment or anything like that. So lewdness, okay, lewd, inapt, like usually sexually, ठीक है? So again, if I talk about bliss is something which is ठीक है आपको बहुत अच्छा लग रहा है blissful, right? So again, it's not related to depression at all, कोई तरीके का sadness है, depressed हो या some kind of financial crunch that we are facing, ठीक है? So it's actually related to something being indecent. So absolutely correct. नेक्स्ट पे चलेंगे admonish. Is it punish, is it curse, it is dismiss or reprimand? Ma'am, option D, reprimand. Okay, great. Yes, guys, because when I say admonishing someone or reprimanding somebody, we can somewhat correlate these words to rebuking also because when you disapprove of somebody, ठीक है आप disapprove कर रहे हो उनको, right? You are disapproving them. यूजुअली हम पब्लिकली कर देते हैं किसी को या ऐसा डांट दो फटकार दो या ऐसा तो इट्स रिलेटेड टू दैट राइट सो अगेन किसी चीज को अगर आप डिसमिस कर रहे हो खारिज कर रहे हो या कर्स कर रहे हो बुरा बोल रहे हो पनिश कर रहे हो सजा दे रहे हो सो दीज वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड टू दैट राइट सो द आंसर वुड बी reprimand करेक्ट what is diligent is it progressive is it brilliant is it inventive or is it hardworking Ma'am, option D, hardworking. Okay, great. So, see, if I call somebody being diligent, it actually means that they are really hardworking, ना? कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा diligent होते हैं, they like to work sincerely, so we call them hardworking. Again, it's not related to any kind of progress that something is making और ठीक है progressive है बहुत ज्यादा progress कर रहे हैं किसी चीज में ठीक है और somebody being brilliant or intelligent या inventive invention से कोई मतलब नहीं है. So the answer would be hardworking. Correct. Okay. Defy. What is it? Is it flatter? Is it challenge? Or is it sorry, worship? Or is it face? Ma'am, option C, worship. Okay. Okay, guys. Yes, guys, absolutely right. When I talk about Fi, it actually is a word which is related to you worshipping something. ठीक है, it's not related to you flattering somebody or trying to impress them. ठीक है और you trying to challenge
or you trying to face, it's related to worship. So absolutely correct. Diaz, what is it? Is it flutter? Is it catch? Is it platform or is it pill? Hmm. मैम ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म. ठीक है. Yes, guys, see, because when I say something is fluttering, right? Fluttering तो ऐसे जैसे कि हम बोलते हैं ना कि if I talk about wings of a bird, right? So it starts to flutter, right? ऐसे जोर जोर से मूव करना लग जाता है मतलब flutter मतलब क्या बोलते हैं ऐसे फड़फड़ाने लग जाता है as we say, right? So that cannot be the answer. Catch is not at all the answer. It's actually related to some kind of platform या podium जैसा भी बोलते हैं, ठीक है? So that would be the answer. It's not related to any kind of pill or capsule or whatever. So platform is the answer. Correct. Next करेंगे. Futile क्या होता है? Ineffective, hedonism, calculate और delay. It's a futile activity. मैम ऑप्शन ए इनइफेक्टिव. Hmm. Yes, absolutely right. When I talk about anything being what do you call futile, so it means it is ineffective. Okay, not that useful. Again, when I talk about hedonism, it is related to pleasure. ठीक है जो आपका क्या बोलते हैं इट्स अ philosophical school which talks about pleasure maximization of pleasure so hedonism अलग word हो जाएगा we are not talking about किसी तरीके का आप कैलकुलेशन कर रहे हो या किसी चीज को डीले कर रहे हो ठीक है बाद के लिए तो इट्स इनइफेक्टिव वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का चेरी क्या होता है बॉयंट हेल्पलेस कैजुअल और डेस्क हम्म मैम ऑप्शन ए बॉयंट. या व्हाट कैन बी अनदर वर्ड फॉर इट हमने कल भी किया था ना चेयर चेयरनेस से या ऐसा कुछ समथिंग विच इज चेयरफुल है ना बी से ही था जॉली. हाँ जॉली भी बोल सकते हैं बॉइस्टरस भी किया था राइट यस करेक्ट very good. Absolutely right. So the answer would be buoyant, right? Something, if something is really cheerful, it has a lot of energy. So buoyant बोल सकते हैं. Again, helpless हम नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, we are not talking about कोई चीज helpless है या कोई चीज बहुत ज्यादा casual है किसी चीज को लेके या desk तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है, so that won't be the answer. So guys, these were the only questions. So basically we have practiced all the questions for today. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे विच इज गोना बी ऑन मंडे जो होगा हमारा सिनोनिम्स का क्लास 4 ठीक है सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क और वी विल क्विकली कंक्लूड द सेशन नाउ ठीक है पर यूट्यूब पे ओके ओके बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक मिनट में यस गाइस क्या क्वेश्चन है पूछो यूट्यूब वाले बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ गाइस सीडीएस के लिए भी कोर्स है जो बच्चे पूछ रहे हैं सीडीएस का क्लास का टाइमिंग अलग होता है आई होप मेरा क्लास एको नहीं हो मतलब आवाज एको नहीं हो रहा है नो मैम. अच्छा या गाइस सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस हाँ जिनको सीडीएस का क्लास लेना है
उसका आवाज ही लग रहा है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ स्क्रीन पर। सो उनका टाइमिंग इज हेयर, यू गाइस कैन सी 4, 5:30 एंड 7। सो सीडीएस का टाइमिंग अलग होता है। आई गेस आई गॉट स्टक नाउ। Ma'am, actually, you're not visible. हाँ, अभी अभी एम आई विजिबल इफ आई मूव? बिकॉज आई कुड सी कि मैं स्टक हो गई थी बीच में, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम अभी का पता नहीं, बीच में शायद से हुआ था एक दो बार, उतना ध्यान भी नहीं हाँ, दिया। पता नहीं क्या ही होता रहा। छोड़ो। हाँ जी, रॉ ऑपरेटर जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी आपका ऐसे मेडिकल आउट हुआ, बट हो सकता है। अच्छा, तुम लोगों अभी, हाँ, सिर्फ कौन है? हिमांगी है और गंगा। तुम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है कि पहले भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है? मैम पहले भी किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, सो सेकेंड अटेम्प्ट है फिर। सो हाउ, आ, अच्छा, हाउ वाज इट दो? पहला जो अटेम्प्ट था। मैम नॉट सो फ्रूटफुल। अच्छा, हार्ड नॉट मतलब सो। क्वेश्चंस ऐसे अच्छे ही आए थे। आई वोंट से कि टफ आया था या फिर मॉडरेट आया था, इजी था, बट लाइक क्या मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रखी इन लोगों ने, तो उसके वजह से नहीं हो पाया। अच्छा 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 अच्छा, ओ, हो जाता है। आई गेस इस बार तैयारी ऑब्वियसली बेटर ही होगी। सो होपफुली, यस मैम। होपफुली होपफुली। ठीक है फिर गाइस, अभी मैं भी चलती हूँ। राइट एवरीवन, पता नहीं थैंक मेरे यू मैम। देखिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।